Jai Hind student, as we are revising the force and laws of motion. Today we are going to solve some objective questions based on the concepts which we have read. So starting from that, question number one says that identify the correct statement. First is to accelerate the motion of an object, a balanced force is required. Okay. Statement two is balanced force do not change the state of rest or motion of an object. Three, balanced force do not produce any acceleration. They can change the shape or size of the body. Okay. Now, if I have read these questions, what I understand is that three is the totally absurd thing. That means balanced force do not produce. Sorry. Here it is written as do not, which means it's a positive statement. Balanced force do not produce any acceleration. Good. They can change the shape or size of the body. लेकिन यहाँ पर बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज अगेन ट्रू. ठीक है. स्टेटमेंट टू मतलब अपने पास ऑप्शन में हमारे पास आना चाहिए क्या स्टेटमेंट नंबर थ्री. ये तो होगा ही होगा. स्टेटमेंट नंबर वन देखते हैं. टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ बैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड. इज इट नेसेसरी? कैन वी produce can we not produce the acceleration in a body without the balance force? So yes it is कि आप जब अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तब भी तो बॉडी में एक्सेलरेशन होती है. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया. नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बिल्कुल ये क्यों नहीं हो सकता? सपोज दिस इज द ब्लॉक and you are applying a force here and here. Okay, this will change the state of its motion or the state of rest also. कैसे? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज देयर इज अ बॉल मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा पीछे लग रहा है. इन द केस व्हेन दिस फोर्स बिकम बैलेंस द बॉल विल बिकम स्टॉप. तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट और मोशन को ये चेंज कर सकता. तो मेरे पास ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए आंसर्स में हमारे. ये चीज खत्म. जैसे ही ये खत्म हुआ ये खत्म होगा. नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर टू. ये ओनली स्टेटमेंट टू एंड थ्री आर करेक्ट. आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं. ओके. नाउ coming to the question number two, this question says you that a cannon after firing recoils due to. Now it's a factual question. वो कैनन आपकी इधर बल्कि से स्टेट होगा. यहाँ फायर करने के बाद ये थोड़ा सा पीछे की तरफ रिकॉइल क्यों करती है? बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बी ऑप्शन बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. दीज आर द ऑप्शन. अब जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे आ गया कि दैट बैलेंसिंग की कंडीशन जो कुछ भी रिकॉइलिंग की कंडीशन हम लोगों ने किया था दिस वाज बिकॉज ऑफ ओनली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हो गए हमारे पास. ओके. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री से अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेस velocity of a body. Force cannot be. ध्यान रखिएगा. It is asking can not be. कुछ ये वाली बात वो पूछ रहा आपसे. The forces cannot be. A number of forces acting on a body changes. ये change हो रहा है velocity of the body. The force cannot be paralleled, unbalanced, inclined, balanced. अब अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी में और वो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है तो मैंने आपको ये बताया था क्लास में दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द वेलोसिटी
or changing the direction or changing the anything which you are considering that is changing. This will be only and only because of unbalanced force. तो inclined force भी हो सकता है. Suppose मैंने आपसे कहा कि force ऐसा लग रहा है, then it is making an angle theta with the horizontal. You will get to resolve f cos theta in the horizontal direction, f sin theta in the vertical direction. Okay. तो आपका inclined भी हो सकता है, unbalanced भी हो सकता है. Parallel का mean, suppose this is the block and you are applying a force here and another force is here. These are the parallel forces. So if they are not in the case of balance, then they will again move the body or change able to change the velocity of the body. So yes, parallel could also be the correct option. The force cannot be. It is asking for the negative statement. So the only option left is balanced. So this way you have to solve the question. Question number 4. That is in this way. Question number 4. Question is, if a body is moving alone, a constant speed, it may be assumed that if a body is moving alone, कोई एक body अकेले चल रही है at a constant speed, ध्यान रखिएगा ये concept मैंने क्लास में डिस्कस किया. It may be assumed that first option, a net force is pushing it forward. Okay. The sum of only vertical forces is 0. Okay. The buoyant force is greater than gravity. Okay. Wait a minute. Option, the buoyant force is greater than gravity. The sum of all forces is 0. Okay. A body is moving at a constant speed, which means that constant speed, the net force on the body is always 0. Net force on the body is 0. ये क्वेश्चन आपके क्लास 9th एससी वर्मा में भी दिया हुआ है और वहां पर काफी बढ़िया एक्सप्लेनेशन है. वो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया भी है, तो आप एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं अपनी नोट्स के थ्रू. अदरवाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज आई हैव टेकन इट फ्रॉम द एससी वर्मा आल्सो. ठीक. So if a body is moving at constant speed, which only means that the sum of all the forces on the body is 0. Okay, moving next question. Galileo's law of inertia is another name for Newton's dash law of motion. इनर्शिया की बात आप केवल और केवल न्यूटन फर्स्ट लॉ करता है, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. क्वेश्चन नंबर 6. A rider on horse falls back when horse starts running all of a sudden because. अब ये बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको मैंने बताया है. अगर कोई बस है, if there is a bus and there is a person standing inside the bus and the bus starts moving all of the sudden, then this person feels backward pressure. Or when you are sitting or when you are riding on a motorcycle, so जो आपके पीछे बंदा बैठा हुआ है उसको भी एक सडन जर्क लगता है. तो ये सारी चीजें होती हैं. दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द momentum. Momentum has to be maintained always. So rider is taken back or law of conservation of energy or mass. यहाँ पे ऑप्शन शायद मिट गए हैं. तो आपको मैंने आंसर बताया था कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आपकी क्लास के अकॉर्डिंग दिस इज लीनियर मोमेंटम कॉन्सेप्ट. लीनियर momentum. E is equals to mv, where m is mass and v is the velocity. This you have to solve and collect your doubts. Pay attention that you have to use the method of elimination also, and
रेक्टिफाई द टू इनकरेक्ट ऑप्शन इन अ फर्स्ट ग्लांस, कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा और उसके बाद आपको दो इनकरेक्ट ऑप्शन तो आप सीधे देखकर ही खत्म कर सकें। जो बाकी का 50% आपका क्वेश्चन है, दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शन, वहां पर आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं और यू कैन यूज योर कॉन्सेप्ट एज वेल। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो रिवीजन भी आपका जल्दी होगा और चीजों पर आपकी कॉन्फिडेंस आएगा। तो थैंक यू एंड जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।